Okay, tell me top 2 traditional banks and top 2 modern banks. From a legacy bank, Union Bank of India हो गया, State Bank of India हो गया, Punjab National Bank हो गया. Tell me a modern bank, which one do you like? HDFC. Why different banks give you different kind of credit limits? There are 3 factors. Banks' risk-taking ability, their risk exposure, and number 3, their way of profiling. There's a economic time study. लोग अपना बैंक अकाउंट बहुत frequently change करते रहते हैं. And when they were asked कि क्यों change करते रहते हो, 60% of the people were not happy by the products which banks sold them. This is inbuilt in our culture. If you see in the last couple of years, everybody used to have a credit card. जो credit card बेचा ना वो एयरपोर्ट में, वो कभी ये नहीं बोलेगा क्या करना है. वो he will tell only the good parts. सर आप ये ले लो, आपको लॉन्च मिलेगा, all those things. This clarity is missing in any industry. Do you think हर product के ऊपर pros and cons लिखे होने चाहिए? थोड़े बहुत pros and cons लिखना जरूरी है. स्टैंडर्ड एक लोन देने के लिए चेकलिस्ट क्या होती है? जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखते हैं उनमें से 73.8% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते. तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी कुछ वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेटर गेस्ट और बड़े गेस्ट हम ला सकते हैं आपके लिए, ताकि आपको और बेहतर वैल्यू मिले. आज का एपिसोड इंडिया के पैसे के ऊपर है, इंडिया के बैंक्स के ऊपर है. कैसे हम ये समझें कि हमारा पैसा कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा सेफ है, कौन सा बैंक हमारे लिए सबसे अच्छा है, कैसे हमें क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलती है, कैसे हम हमारे पैसे के साथ बेहतर तरीके से बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, पुराने बैंक्स और नए बैंक्स में डिफरेंस क्या है. तो ये पॉडकास्ट आखिरी तक ज़रूर देखना. अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हो तो उससे ये समझ आएगा कि कौन सा बैंक आपके लिए सही है. अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको पता चलेगा कि जितनी आपकी बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एक नया सॉफ्टवेयर, नई कंपनी, नई एप्स आसानी से सॉल्व कर सकती है विद द हेल्प ऑफ AI. और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो जो सोच रहा है कि मुझे ना कुछ बिजनेस करना है, तो ये पॉडकास्ट देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इंडिया में फाइनेंस और बैंकिंग में प्रॉब्लम कौन कौन सी है. एंड उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है आपको एक बड़ा बिजनेस बनाने का आइडिया मिल जाए. हमारे आज के गेस्ट हैं YS प्रभु कुमार. ये वीगोफिन के CEO एंड फाउंडर हैं. ये एक ऐसी ऐप है जो AI के थ्रू आपकी बैंकिंग लाइफ बेटर करती है. ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर वैल्यू मिले. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. प्रभु कुमार, वेलकम ऑन फिगरिंग आउट. कैसे हो सर आज? बढ़िया, थैंक यू. ओके, टेल मी, ट्रेडिशनल बैंक्स और मॉडर्न बैंक्स में क्या डिफरेंसेस है? ग्रेट. क्या है ट्रेडिशनल बैंक्स में मिसिंग पॉइंट्स जो मॉडर्न बैंक्स एंड मॉडर्न फिनटेक एप्स जैसे आपकी वो बेटर कर पाते हैं? जस्ट मेक अ कंपैरिजन. आई वांट टू मेक इट प्रॉपर. ट्रेडिशनल वर्सेस, you can call it as traditional or legacy banks. So ये जो ट्रेडिशनल एंड लेगेसी बैंक्स है, दे आर ड्रिवन बाय लेगेसी. ड्रिवन बाय लेगेसी मतलब क्या? ये जो सिस्टम्स या जो उनकी जो पॉलिसीज थे, दे वर ऑल फ्रेम्ड वे बैक. दे वर नॉट मेंट, यानी यूं समझ लो, एक सिटी डेवलप करती हो तो उस टाइम पे डेवलप करती हो. वरना क्या होता है ना, यू एंड अप हैविंग लॉट ऑफ कैओस. तो दीज प्रोसेसेस एंड द प्रोडक्ट्स, in fact now you see even they are changing. They are trying to, for example, SBI is one big bank, the biggest bank. They have YONO app, one of the flagship app, and they have done a wonderful in terms of growth in that product as well. It's a well accepted product. So as a process, if you see, they don't have that new age processes. यानी कि इनके जो process है, they are not built for the new age. Give me an example. मतलब old versus new तो समझ गया, वो लेगेसी प्रोसेसेस को बिलीव करती है, न्यू एज नहीं है. क्या है न्यू एज? Now I'll tell you about the new age banks. See, new age banks are able to give products in terms of both product and service. See, there's a very thin line between product and service. हम तो समझ. Explain करो. I'll explain. For example, if you're a small bank or small business, you need a API to do a fund transfer. तो आपको मॉडर्न बैंक दे देती है एक API जो चाहिए आपको, फंड ट्रांसफर API, जो इट्स वेरी सिंपल, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, और उसमें बैंक को भी उतना कोई नुकसान नहीं देने से, एंड देयर इज नो मच रिस्क इन्वॉल्व इन इट. See, there is a certain element of risk that has to be there, and we have to cover that. But you needed a small API to fund transfer. You get it very easily. You can incorporate or integrate with your system very easily, and you can start using it in a limited time frame. अगर वो legacy bank दो, they have a challenge to give.
So there will be a lot of going through, you have to understand, they have to understand, and you end up at certain point में लगता है आपको नहीं चाहिए मुझे. Okay. तो और एक बात भी है, they have institutional challenges. Any product. Now I'll talk about individual. For example, individual अगर आप legacy बैंक के साथ अगर आपका कोई अकाउंट हो, आपको क्या चाहिए as a individual? आपको you need a credit card, you need a locker, and probably you might need one more account for your family member. So and personal loan. Correct. So loan is one thing, because again that's a different segment all put together, lending when we talk about. But other than lending products, जितने भी other products हैं, तो वो क्या होता है, आपको वो देने से फर्स्ट ऑफ ऑल हिचकिचाता है. ही इज काइंड ऑफ हेजिटेंट टू गिव यू द प्रोडक्ट बिकॉज ही हैज़ नॉट डन योर प्रोफाइलिंग वेल, और ही हैज़ डन अ प्रोफाइलिंग रॉन्ग. तो उसको ये पता नहीं कि आपका टोटल आपका नेटवर्थ क्या है. ही ओनली सीज यू एज एन इंडिविजुअल एट दैट अकाउंट लेवल, दैट ब्रांच लेवल, एट दैट पर्टिकुलर लेवल. तो आपको पूरा पोर्टफोलियो नहीं देखता है. हो सकता है कि अगर मान लो उस बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 रखे हो और किसी दूसरे बैंक में आपने 50 लाख रखा हो, तो वो तो बस यही देखेगा कि he has to do profiling across you as a individual. So then he can recommend a right product to you which will be useful to you. Now coming to modern bank, what they do, they are one step ahead. They're able to understand you as a persona. They're creating a persona for you, like what all you do, what all you have, and what might be best for you. So they recommend the product, and the ease is there. There's a bit of ease, and they have built technology. They are invested in technology, and they think technology is the only way to deliver any product or any service. And when you're talking about masses, like you want to create thousands of accounts, thousands of products, do a lot of to and forth. Yeah. So they give it quickly. Okay, tell me, according to you, क्योंकि आप इतने सारे बैंक्स के साथ काम करते हो और आपने इतने सारे बैंक्स को स्टडी किया है, top 2 traditional banks and top 2 modern banks. This is a very tricky question. Top 2 cannot, I'm not asking from the point of view of कि आपको चूज करना है कि यार आपके फेवरेट कौन से हैं, क्या है. मैं सिर्फ ऑल द पॉइंट्स जो आपने एक्सप्लेन करें कि कौन फास्ट है, कौन एजाइल है, कौन जल्दी है, किसका कस्टमर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फास्ट है, किसके टच जो आपसे बार बार रेगुलर फॉलोअप्स करता है बेटर है, सारे प्रोडक्ट्स एक जगह देता है, आपकी कस्टमर प्रोफाइलिंग उनके पास बन जाती है. कौन से ऐसे मॉडर्न बैंक है? I'll not name one or two because most of the banks are falling in the same category. From a legacy bank, Union Bank of India हो गया, State Bank of India हो गया, Punjab National Bank हो गया. They're good? No, they are. I don't say good. You will face challenges by default. That's what. So you will face challenges with those banks because of various reasons, and you will not get that service. Service would be a pain for you to certain extent. And if you see, last year, in Niti Aayog has referred that it's an urgent need for cooperative banks to come up to the pace of what the commercial banks are there. It's urgent need, they're telling, because the reason being is largest number of internet penetration is in rural area, more than 60%, because we are a rural country, right? Yeah. Number of tier 3, tier 4 cities are more than your urban and tier 1, 2 cities. True. Population वहाँ पे ज़्यादा है, and the largest number of banks are there. यूँ समझ लो 1500 से 1800 तक cooperative banks है. Large banks कितने थे? 33. So that means the banking is happening at that level at rural. So the cooperative banks have to be empowered. No, they can't do this business. They can, maximum what they can do, they can open an account, they can lend some money, और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे. Because they don't know what to do. So then we come. So what we do, one of our solution is tailor-made for a cooperative bank. So where we onboard them as our client. We take care of the entire tech part. So that too on a very light model where it's all SaaS model, web-based model. So where they need not invest much in technology. They need not invest. Because the biggest challenge for a cooperative bank is they have to invest money. And they don't want to do it. And even if they do, who will run the show after that? यूँ समझ लीजिए आपने कुछ टेक्नोलॉजी बना दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने सब ले लिया. Who will run the show? They need to have the team. और वो टीम वहाँ पे नहीं बैठेगा. Right? Understand, right? So then what happens? The entire exercise goes for a toss. So they don't want to do, but they want to grow. How will they grow? So their book size remains the same. Now what we do is we onboard them as our client. Then we help them to onboard a merchant onto them. Now if you see today, in today's situation, I don't know if you are aware, in rural places, most of the businesses have a account in cooperative bank. वो क्या करते हैं पता है? जितने भी उनकी उस दिन का कलेक्शन है, एग्जाम्पल मान लो कोई हलवाई है, कोई स्वीट शॉप का बंदा है, तो डेली उसका कलेक्शन है 5,000 या 10,000.
तो वो सब कुछ 10,000 वो उसी कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट में लेगा, नेक्स्ट डे कोई बड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. This is a very relevant thing happening. 98 or 99% do this. They don't keep anything in cooperative bank. You know why? Because they're scared. Not about scared. One is scared because anything can happen anytime. Number two, they can't mobilize the funds the way they want. अगर आपको इजीली निकाल नहीं सकते पैसे, इमीडिएटली तो नहीं निकल सकता. हो सकता है उसकी नेट बैंकिंग काम ना करता हो, उसके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन ढंग से ना हो. इमेजिन अगर वो करना चाहता है, लिमिटेशन कम हो, अगर मान लो 10-15 लाख है उसके पास, अगर वो वांट्स टू सेंड और वो बैंक सपोर्ट ना करता हो तो क्या करेगा? Why would he take that hit? Because he has to run the business. So what he does, he uses that cooperative bank only to collect. जैसे पैसे आ गए वो बड़े बैंक को, शायद हो सकता है कोई ICICI हो, HDFC हो, भेज देगा. Tell me a modern bank. Tell me a modern bank. So, which one do you like? Modern bank in terms, yes, HDFC. You'll consider HDFC as modern? Modern bank because they are constantly growing. Okay. They are very new. Any of the new banks, these apps and stuff which you like? In terms of apps, one bank is there, IDFC. IDFC, they have done tremendous good work in apps. And neo banks वगैरह? In terms of neo banks, it's too early to say because again as a neo bank they have some challenge. They need to ride on some major bank because neo banks does not have a license from RBI. For example, and you take any name, so they ride on a major bank like ICICI, HDFC or some other bank, right? For example, Federal Reserve. See, if Jupiter is there, they ride on Federal Bank, right? So they give a layered experience, but what happens, as long as their banking partner is strong enough, it becomes a viable solution. अगर नियो बैंकिंग ने कुछ आपको ऑफर किया और उनका जो पेरेंट बैंक या स्पॉन्सर बैंक है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है और वहां पे आपको लैग दिख रहा, दैट बिकम्स अ चैलेंज. सो दैट इज द रीजन neo banking is evolving. Yeah, that's a big space to grow, but lot to happen because there's a big challenge. It doesn't fall under the regulatory framework. Okay, tell me why different banks give you different kind of credit limits? Multiple reasons. One, पर एक सेम ही प्रोफाइल है, ठीक है, और मैं बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे बैंक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्मॉल बैंक्स यूजुअली अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल आइडिया. लेट्स से क्रेडिट कार्ड, राइट? 3 बैंक्स ऐसे, मेरे साथ भी हुआ है, HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस, HDFC. तीनों टॉप है, तीनों टॉप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, तीनों के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के पास टॉप कार्ड्स भी हैं, राइट? HDFC देता है 15 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट मेरी प्रोफाइल पे. व्हेन आई स्टार्टेड, सेम प्रोफाइल पे डे 1 पे स्टार्ट करते थे HSBC देता है 35 लाख की लिमिट, अमेरिकन एक्सप्रेस देता है 30 लाख की लिमिट, राइट? तीनों की लिमिट अलग अलग है ऑन डे 1. आई गेट इट कि 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरा जितना पैसे बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, अकाउंट बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है एंड इट गोज टू क्रॉस व्हाटएवर, जितना जिसकी भी लिमिट होती है, जितने पैसे बढ़ते हैं, दे डू इट दैट वे, राइट? बट डे 1 पे जब आप अप्लाई करो, तीनों के पास मेरी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, तीनों को नहीं पता, बस मेरी इनकम स्टेटमेंट पे 3 अलग अलग क्रेडिट लिमिट्स क्यों मिलती है? बिकॉज देयर आर 3 फैक्टर्स. वन इज बैंक्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी, देयर रिस्क एक्सपोजर, and number 3, their way of profiling you. You said, the last bank which was giving you more loan. The reason is they consider you in a different category because their understanding towards you is different and they want to take a larger risk, to be very frank. Second bank, what you said, they are in between. They are like risk averse and not risk takers. So they are like, they want to play safe. They don't want to give more, not less, because the reason is they want to take a chance with you. If you see, again, age group also matters, right? See, everything comes at I'm asking you, HDFC, HSBC, Amex, तीनों के प्रोसेसेस बहुत वेल डिफाइंड होंगे, तीनों बहुत बड़े बैंक्स हैं, राइट? एंड तीनों का ऐसा नहीं है कि हम छोटी सी कंट्री में कहीं पे कुछ हैं, तीनों बहुत लार्ज हैं इन देयर ओन गेम्स. स्टिल द रीजन बीइंग इज तीनों का अप्रोच बहुत डिफरेंट है. तीनों लाइक बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है. व्हेन यू टॉक टू देम इज़ डिफरेंट, व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर प्रोसेस इज़ डिफरेंट. जब आप उनसे बात करते हो, एक दिन में जो चीज़ इनेबल करते हैं वो तीनों बहुत अलग अलग चीज़ इनेबल करते हैं. सही. सो व्हाई इज़ दैट? प्रोफाइल तो एक ही इंसान सेम है, जज करना है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना. करेक्ट. इतना डिफरेंस इसलिए आता है, हाँ, कि मतलब भाई ठीक है 5 लाख दूंगा तो मैं 6 लाख दूंगा, मैं 7 दूंगा, 5 का 50 लाख, इट्स दैट, राइट? इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन you can only do, let's say, 10-15 lakhs in HDFC, but you can do
35, 40, 50 lakhs in HSBC, right? A crore in Amex. मतलब तो जैसे single day transactions में इतना differences क्यों है? Same profile पे. Same. And also if you see, every bank gives you a different limit of transaction. You heard that? हाँ. Limit is okay, I get it कि bank. You are same person. You are means for example, you have XYZ company. That company has same balance sheet. हाँ. Same documents, you open in same 3 different places, but every bank has a different per day limit, per quarter limit, per limit. So why is that? So I'm just combining these 2 things because their risk-taking appetite and their methodology of assessing you is different. So for example, I'm telling you about a very conservative bank. They will tell, आज first day आप only 25,000 कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो. भले कुछ भी हो, यानी कि आपके पास 20 करोड़ भी हो, you can't do more than 25 transaction. So then there's one more bank which you tell, day 1 you can do 50,000. For example, DBS Bank is there, Singapore-based. No. So the limits are like insane. I know. Why? Piyush sir crazy. And that same limit applies even for an Indian customer. It is not that it's for a customer who is based out of Singapore or Hong Kong. It is for the same, even in India, same limits apply because their banking methodology is very different. The reason is they know how to take risk. I'll tell you why. They are they're one of the bank in terms of technology. They're the forefront runner. Yeah. Heavily invested, and probably they're one of the best tech team in the world for that matter. Even fintechs might fail, they might not fail, and they're very secure in terms of everything. So what they do, they have mitigated the risk in a very beautiful way. So whether it is for limit, whether it is for giving a more credit, they have understood a profile, and they have incorporated new mechanisms to recover the funds using your profile. See, giving a limit is slightly different because in the limit, what happens is your money. Your money is going out. In the point of a credit card or this thing, where the money, it's the bank's money. तो बैंक का मनी आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो जानते हैं कि ये बंदे को अगर हम ज़्यादा देंगे तो स्पेंड करेगा. Let him do for sure. And they also know how to recover. So that recovery mechanism, what they have made, is very well defined. Because the touch point is the same PAN card only. See, for example, today in any bank where you want to go and apply a loan, first thing they ask is what? PAN card. Because every financial data is connected to the PAN card. And it can't go wrong. Then comes your, other documents like your, passport and your, CIBIL and all. That gives you a fair understanding who you are. But whatever you have done, how many see, if you give a PAN card number, you can make out how many bank accounts you have, where all you have money. You can make out that. So their understanding is slightly different on the first bank. They see this guy has so much, so let us take a risk. And risk appetite of those banks are larger. You talk about Citibank, which now again it's in India got merged with Axis. So you take a name of HSBC Bank. They are well ahead of taking a risk. They're the biggest in the world, right? And that is why they are biggest. If you take about, again it might be a wrong example, JP Morgan, their way of working is completely different. You take a name of Chase, their way of working is different. So they are so huge and among us, for them this looks very tiny. So what happens when your portfolio and your exposure is too much, हो सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसको कहेंगे हम कैटेगरी 8 एग्जाम्पल, देर आर लाइक कैटेगरी 30 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट पर्सोना. आप कैटेगरी 8 में बैठते हो और उनके पास कैटेगरी 100 है. तो when they compare you 8th category among that 100 categories, you are like very tiny in front of. दो यार, उसको जो देना दो. क्या कर लेगा, ले जा. एक बार तू ले जा यार, 1 करोड़ ले जा यार. Try कर लो. So their assessment is on a global scale. If you see in the last couple of years, ये जो credit card का rampage was there. Everybody used to have a credit card. अभी भी है. हर एयरपोर्ट पे निकल जाओ तो जब तक आप बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुंचते हो तब 4 लोग आपको 500 लोग बैठते थे. 4 तो पहले हुआ करता था, अब हर कोई बेचता है. Not only एक बैंक के 4 लोग खड़े होते हैं. उनका एक कियोस्क रहता है. Not only that, I have seen that in most of the shopping malls. If you go to any shopping mall, you get one kiosk of one bank and 4 or 5 people, ready to, welcome you. I've not seen that. I've not been to a shopping mall in years now. Okay. I don't know, but I've seen it on airport. Airport is, it's a mandate because they have to be there. So then what happens? He forces the product. जिस बंदे के पास 1 क्रेडिट कार्ड है और उसका स्पेंड उतना ही है, तो उसको 4 क्रेडिट कार्ड देने के क्या फायदा है? तो क्या होगा, वो I'll tell you, you will end up not using that. Then you will end up
Paying the annual putting fees or higher fees and putting CIBIL into trouble. तो क्या होता है ना, if you don't pay the card, if you don't pay in stipulated timeline, there is a penalty to it, right? Interest fee. And for example, if you forget, most of the people they don't know how many cards they have because उनके जेब में तो 4-5 कार्ड है, तो उनको ये भी पता नहीं कि कौन सा कार्ड कब लिया था, और हो सकता है कि उनको ये पता नहीं कि किस कार्ड का वो लास्ट डेट कब है, बिकॉज नो यू डोंट हैव द डिसिप्लिन, राइट? तो क्या होता है, वो उसके दिमाग में एक ही रहता है कि मैं HDFC का कार्ड लेते एग्जाम्पल, उसको मैंने 10 तारीख को पे करना पड़ेगा, बचाओ 2 कार्ड वो पे ही नहीं किया, तो एक दिन वो फ़ोन करेगा, वो बोलेगा सर आप पे नहीं किए क्यों, and that ends up in some sort of discussion. If he's well in time, he's able to pay. वरना क्या होता है, उसका सिबिल खराब हो गया. तो now what happens is सिबिल स्कोर is going low. He goes to imagine he wants to apply for a personal loan. वो लोन रिजेक्ट कर देगा क्योंकि सिबिल बेकार है. सिबिल बेकार है, तो ये गेट्स इरिटेशन अबाउट दैट कार्ड, तो उसको नफरत होने लगी इसकी वजह से मेरा सिबिल. बट उसको ये पता नहीं कि इसकी भी दोनों की गलती है. जो क्रेडिट कार्ड बेचा ना वो एयरपोर्ट में, वो कभी ये नहीं बोलेगा क्या करना है, वो ही विल टेल ओनली द गुड पार्ट्स. सर आप ये ले लो, आपको लॉन्च मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स. सो you end up getting a wrong information. See, for example, just Amex card, everybody can't buy, right? Why? There's a filter at category. So it's very clear. So who needs that and who falls into that category can be easily eligible for that Amex card. And even Amex does not have any problem to give that card. अगर मान लो criteria में बैठता ही नहीं है, तो उसको क्यों देगा वो? They don't want to, have a wrong customer in the ecosystem. Same way, this bank also should understand when they are giving any product to their customer other than a card, they should also see this. ये सही है या गलत है. So that doesn't happen most of the cases. That's where we end up seeing all these situations. And one more thing I have seen, coming to this loan lending part. See, that's also big market lending. There is a overselling of that product. अभी हमारे गवर्नर ने ना, they said the same thing, right? He said I think yesterday or day before yesterday he gave that statement कि NBFC को सिर्फ ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए वो किसी को भी कुछ भी किसी भी रॉन्ग प्रोफाइल को लोन बेच देते हैं, और वो जैसे ही उनको लेंड कर देते हैं, करते जाते हैं, they don't realize that this can be harmful for our economic stability. Correct. Right? That's what he meant, right? Exactly. Something like this only he said. Because he's giving the speech. So there are more than I think growth at any cost is not good. See, if I'm not wrong, आज की तारीख पर एक 10,000 तो NBFC हो सकते हैं, 10,000 तो easily 9,000 to 10,000 आते हैं. एक 100 से भी ज़्यादा lending partner होंगे, digital. I'm talking about only in digital. तो इतने लोग क्या करते हैं? I do agree. We have a larger, population. They keep on selling a wrong product, and they never give a clarity on the interest rates. And मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि हर कोई ये बंदा करता है, हर कोई वो करता है. But what I have seen, or it's heard and noticed, when they are approaching him for the first time, they give all the clarity. They are very kind to him to give him whatever is been asked for. As that progression happens after 1 month, 2 month, 3 month, that same is not followed. हो सकता है कि NBFC का बंदा जो भी है उससे बात ना करे. They only go for one thing, whether it's for a recovery or that repayment, but they don't tell how to use it. What are the use cases? Like on what particular date your interest rate is calculated. So these are the things which has to go explicitly. यानी कि आपको वो एक printed form पे देना होगा, उसका acknowledgement भी लेना होगा. If you see, it's a wrong thing, but you would have heard in the last couple of months, people have committed suicide and all, not paying. They're not able to pay the loans and all. Why this happened? This is very wrong, right? Means आपने पैसे लिए आपके for some need and you are not able to pay it. यानी हो सकता है कि गलती दोनों की तरफ से हो. We don't want to get into that, why it went wrong or what measures that person took. But we also need to understand somebody who is lending that amount. Did he give the clarity? Did he tell properly? These are the consequences. वो कोई बात नहीं करता है. See, for example, I'll just tell you. If you see most of the apps, these apps, they tell give your PAN card and give this thing, take a loan in 2 minutes. Very good. I'm really happy for that. But उसके बाद क्या? What are your repayment terms? But don't you think कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमी में जितना ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होगा, जितने ज़्यादा लोगों को, जितने ईजिली, उतना ज़्यादा बेटर होगा इकोनॉमी के लिए, बिकॉज वो लोगों की कंजम्पशन पावर, स्पेंडिंग पावर, इन्वेस्टमेंट पावर एंड ग्रोथ पावर चारों बढ़ाता है. So it's actually good, right, to
But फॉरेन इकोनॉमी नहीं, for कि an तुम economy ज्यादा point लैंड of करो view, और सही तरीके से लैंड करो बट जल्दी लैंड करो. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड come down. And what I also feel is lending has one more challenge here. See, you should lend more. I do agree. You need to get more capital in the market. Then only capital, the growth is possible. जब तक आप कैपिटल डालोगे नहीं तो ग्रोथ कहाँ से होगा. दिक्कत ये है कि you should not give to capital to a wrong guy. And you should also look at the profile. तो क्या होता है ना, ये digital profile में when it comes to unsecured lending. See, secured lending is a different topic. टेल मी, एक लोन देने के लिए या लेंडिंग करने के लिए चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए किसी भी बैंक की, क्या होती है? See, every bank has लोन देने के लिए standard. हाँ, तो स्टैंडर्ड एक लोन देने के लिए चेकलिस्ट क्या होती है जिससे आप डिसाइड करते हो बंदा सही है कि नहीं है? फर्स्ट थिंग इज दे लुक अबाउट इज बैंकिंग प्रोफाइल. कहाँ पे बैंक है, क्या अकाउंट है, क्या बैलेंसेस है. देन कम्स इज सिबिल. These two are the very mandate, जिसके बगैर तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती. Then comes they look into his credit worthiness. Credit worthiness comes to various things. कि उससे if you see today because credit worthiness मतलब क्या होता है? Credit worthiness ये होता है कि ये उस क्रेडिट के हकदार है या नहीं, या देने के बाद क्या होगा, या आर वी गिविंग हिम द राइट अमाउंट ऑफ क्रेडिट. या यूं समझ लो वो उसका 5 लाख का क्रेडिट वर्थिनेस है, वी शुड गिव हिम लेस देन दैट. या ऐसा नहीं कि 5 लाख बंदे को हमने 50 लाख दे दिया. एंड सेकेंड थिंग इज वो क्रेडिट लेने के बाद डिफॉल्ट करने के क्या चांसेस है या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. सो सी, थैंक्स टू द लेटेस्ट पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, everything is openly available. If you just pull the data from using a PAN card, you get all the data. So what these agencies do is, third party agencies, they understand his credit profile. They understand what he is worth of. कहाँ, if there is any red flags, for example, कहीं उसने लोन लिया था, default कर दिया. So they get understanding. One is your CIBIL profile, which gives a parameter, 720, 730 के above it's good and all. So there is a parameter to it. Second thing is, they'll also understand his history. क्रेडिट हिस्ट्री, उसने डे 1 से क्या लिया था, वॉट एवर इज द डेटा अवेलेबल. शायद हो सकता है कि जिस दिन से उसका पैन कार्ड एक्टिव है या कोई फर्स्ट अकाउंट. सो यू गेट एवरी डेटा. सो दैट डेटा इज देन अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड इन अ बेटर वे क्या हुआ था. सो देयर आर सम केसेस, somebody in his 19s or 20s he would have defaulted a loan and later he would have paid, but still it is a remark. So when a banker or a lender sits and understands why it happened, what happened, was it is he defaulter, is he a habitual offender, or it happened once, because of whatever reason. Everybody can go wrong, right, once in a while. So then his index is made. Then they also talk about the other. Then comes, if you talk about the secured lending, they take some sort of collateral, which should be higher the value of what is taking. Simple it is. तो उससे तो ज़्यादा देगा नहीं lender उसको. अगर वो 10 करोड़ का पूछ रहा तो जाहिर सी बात है 15 या 12 करोड़ का तो उससे ज़्यादा ही पूछेगा वो. दिक्कत आती है unsecured lending में. Unsecured lending is all about a small ticket size, like somewhere around varying from 50,000 to 5 lakh. This is unsecured lending. So just basis of his income on his some data, lending happens. That is the most trickiest part. But that is wrong or good? It is good in one way, but at least some sort of a validation has to be done before do that. I'll tell you why. Now, one thing is, yes, you are getting more capital. You said you are giving him empowerment because you're giving him capital to use for whatever thing. But this should not be a precedence to everyone, right? There should be some checkpoint even in the unsecured lending about all these parameters. So nothing wrong. See, it might be one-time effort. हो सकता है कि आप 10-15 मिनट ज़्यादा बैठो उसके साथ, whether on a mobile or on whatever form factor, try to understand him in a better way. कि क्या कर पाता है, क्या कर सकता है वो. Why he is taking? See, I want to give an example. Most of the people when they take a loan, they don't give the right reason. Right? 90% of people when they ask for a home loan, it's understood for a home loan because that channel is done in a such a way. It goes to the builder or the guy who is selling the property. In the case of personal loan, because it's a personal loan, you can just say like, I want for anything, my home renovation, I want for some marriage or whatever. Some sort of a validation has to be done. The reason being is if you don't do that validation, you don't know why he's taking. No, it is a lender's responsibility to know that. He cannot blindly tell, आप कुछ भी ले लो, आपका प्री अप्रूव्ड लोन है 10 साल का, ले लो, कुछ भी कर लो. That is wrong. Don't you think as a lender he should have that concern to understand why he needs? Wait, talking about lending, do you think कि इंडिया में ज़्यादा businesses grow नहीं कर पाते हैं क्योंकि cost of capital बहुत ज़्यादा है? I completely agree with that. And even getting a loan is also a big challenge. Very difficult, right? Very difficult. So I was comparing cost of capital in the world. US में cost of capital is around
4% to 5, नहीं 2 to 5%. 2 to 5. So US में cost of capital is around 2 to 5%. China में is around 4 to 6%. India में 8 to 10%. तो US और China से जब हम उनको प्रेसिडेंट जैसे देखते हैं और हम देखते हैं कि वाह हमें उतना ग्रो करना है और उससे तेज़ी से ग्रो करना है, and that's what is anticipated. I was checking the global index अभी जो रे डालियो के हेज फंड ने निकाला, उसमें the major economies में जो सबसे फास्ट ग्रो करेगी वो इंडिया है, which is 6.5% GDP हमारी ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर. सेकेंड इज इंडोनेशिया. चाइना वाइना बहुत नीचे आता है, 4.5% पे आता है. सो जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अगले 10 साल के लिए इन द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट हेज फंड सब हम पे बेट कर रहे हैं, राइट. सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पर उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सो हाई कंपेयर्ड टू द अदर इकोनॉमीज. व्हाई? Because capital, you have to understand, we are not a developed country. We are coming from a D&D. We are coming from a developing and economic country. The reason being, only since last 2-3 years or like in the last decade, we have removed that name. If you see all those indexes, they still consider India as a developing and emerging country. The reason being, after independence, if you see, banks were given a mandate to only boost economy. There were no other mandate. Get some money in the market. If you see post independence, money was not available. Means ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि देश गरीब था. Currency, see that time there was no digital currency, and most of the people did not had a currency. It might be in the form of a property or asset, but there was no capital flow. So government thought, the best thing is we have to flow the capital. So banks were given only one mandate to infuse the capital. Then the mandate changed. Then they started into empowering the customer, exposing him to the various needs. As the needs also increased, we got into industrial economy in revolution. Then came the fintech.com and all. Now in the last decade, if you see, we are in the right space, but still, because capital was never freely flowing, available, and capital is always held. And see, we have to understand, we are a cash-rich economy, and most of our investments are in the form of either gold, precious material, or physical assets. So when a country's investment is on those asset classes, if you see the asset classes from gold, real estate to other non-tangible or intangible assets have started in the last 8-10 years. If you see how mutual funds grew, the impact of that, mutual fund sahi and all these campaigns helped. 10 saal purana, if you just go back, just imagine, or if you just check, people were not that, crazy about mutual funds. People were, scared to buy a mutual fund. People were not investing in IPO. Forget about IPO. People were not, that, comfortable to go and invest in the stock market. Pandemic के पहले भी नहीं था. Pandemic के बाद से it started. And if you see that IPO fever is how it has caught up, right? Everyone wants to invest. Because why? Knowledge. Because the awareness started creating what is IPO, what is advantage. बाद में लेने से पहले लूंगा तो I'll get a benefit, right? I get more discount. I'll make more money out of that. So IPO started more, people started betting more, capital started flowing more. And one more thing, GDP, if you look at from that point of view, it is little sporadic in India. See, you can't compare India with any country. True. For various reasons. One is the size, the population, the working capital, and the age group which is generating income. If you see Japan and all, the age group is slightly higher there. They're worried. If you look China, they have disparity. But still they have a constant that jo 30 to 25 to 40, still they have that people still. But if you see in India, what is the percentage of people who are earning? So that is not at par with the population. See how many people are in an earning phase. And how many people are not earning phase? कितने retirement stage में कितने लोग हैं? और youngsters यानी कि जो who are in not less than 18 who don't fall under that capital group, वो कितने? We have huge among that. These two categories, the middle category is what is getting the capital, right? So that is not at par with this. तो वो ज़्यादा जब बढ़ेगा, so more people start earning, more people start getting the capital and funds which come from outside. For example, if you see most of the people when they go out of India, they send money back to India, right? Now if you see how many people are going and how many people are sending it back, how many people want to come back.
Now everybody wants to stay outside for whatever reason you say. And nobody wants to come back. And nobody wants to again reinvest in India. Most of the people wants to either settle down there. If they are settling there, what is the point in investing here? But don't you think more people are investing in India? No, it has started of post-pandemic. Post-pandemic, it has changed. If you see before pandemic, people were having a different mindset. Now things have gradually changed. But now in the last 2 years, 23, 24, you can see people are investing more in India because they understood it's again, various reasons. They have seen that the influx, what's happening, how Indian economy is growing, how digital payments are growing, how the new reforms are coming. So people are seeing that very evidently that yes, now my capital is not at loss. Yeah. See, the appreciation of real estate is what? It increased to an extent. Take any city for that matter, Mumbai, Hyderabad, Bangalore. See the cost. Any city, any city which has reported, forget about city, any place which has reported a depreciation in India. I don't think so. क्या गलतियां करते हैं बिजनेसेस कैपिटल के साथ? टेल मी टॉप 3 मिस्टेक. कैपिटल लेते टाइम क्या मिस्टेक करते हैं लेंडिंग के टाइम पे, जब वो एक्चुअली बोरोइंग के टाइम पे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? तो कैपिटल लेने के टाइम पे बिजनेस क्या मिस्टेक करते हैं, और फिर कैपिटल संभालने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्या करते हैं? आई वुड से दोनों जगह पर मिस्टेक होती है बखूबी. एक तो आई जस्ट गो बाय वन बाय वन. इट माइट बी इन व्हिच एवर ऑर्डर. They take a wrong amount of capital. And second thing is... Wrong amount of capital मतलब ज़्यादा की कम? It will be usually either of the one. 90% or 60% or 70% I would say ज़्यादा ले लेते. They don't take the right amount of capital or optimal, what we use the word. अगर मुझे अब इस महीने के लिए 10 लाख का कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, तो 15 लाख लेने में कोई हर्ज नहीं, मगर 20 लाख लेना शायद, और या 30 लाख लेना मेरे लिए सही नहीं होगा. क्यों? बिकॉज आई एम एक्सपोजिंग टू मच ऑफ माई सेल्फ टू द अनवांटेड कैपिटल, एंड ऑन दैट कैपिटल आई माइट नॉट बी एबल टू अर्न दैट मच ऑफ इंटरेस्ट, बट आई स्टिल एंड अप पेइंग मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट लोन, बिकॉज माई लेंडिंग लोन इंटरेस्ट इज मोर देन माई अर्निंग लोन. अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल 30 लाख ले लिया और 10 लाख मैंने खर्च कर लिया, और 20 लाख का मैंने क्या किया, मुझे तो इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा जितना मेरा आउटवर्ड है. तो क्या होता है, आई मेक लॉस. And that loan of amount, that quantum of amount is not optimally utilized. तो मुझे कितना चाहिए था ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है. तो where businesses go wrong is they don't have advisor. They don't have a proper business consultant to tell. Trust me, one thing I can tell you, any business cannot operate on its own. Yeah. They need to have one person, whether in form of a mentor, guide, professional guy or a personal guy, at some capacity to guide them where they are going wrong. सब तो यही बोलेगा कि just imagine if you meet someone of your if you meet any entrepreneur or any of your friend who is doing business, what you'll ask, कैसा चल रहा है, and you will also tell them सब सही चल रहा है, सब सही बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. Did you go and ask क्या सही नहीं चल रहा है तेरी कंपनी में? You don't ask, right? And neither he is comfortable to tell you. Imagine like normal scenario, अगर हो सकता है, अगर बहुत close है, if you buddy, pal, he might tell यार पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम विद द कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल सही नहीं है, देयर इज अ पेएबल पैसे की दिक्कत है इन शॉर्ट. तो देन द प्रॉब्लम इज अगेन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू माइट नॉट मीट हिम नेक्स्ट मंथ. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, ही नीड्स not you, he needs a right guide to tell him where is he going wrong. He needs an analyst, a financial advisor, a consultant who can guide him what is wrong with his finances. Because I'll tell you, why he went wrong in the first place, you have to understand. It was not his focus. It was not his forte. For example, if your friend is into hospitality was his core where he has invested his time and energy. Now he is not completely conversant with finances. Yeah. Now he needs what? He needs a guru. He needs an advisor who will guide him on the know-how, what to do, what not to do. Then comes taking the advice in the right time. Then comes implementing. So first mistake, they underestimate themselves, or they overestimate. They don't know the limitations. Second thing is they don't take a right call. For example, I need a capital this month. Example, I'm into manufacturing of some lights. So the festive season, Diwali. सो जाहिर सी बात है कि दिवाली से 1 महीने पहले या 2-3 हफ्ते पहले मेरे प्रोडक्शन या मेरा कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, मेरा सेल्स बढ़ेगा. तो एटलीस्ट आई नीड टू प्लान 4 months ahead prior. I need to have the capital in order to
create the good. So I might be in any point of the supply chain. Supply chain में मैं कहीं भी हो सकता हूँ. I might be a distributor, I might be a supplier, or I might be retailer. So in the entire supply chain, all of these people have to understand proactively that what am I doing. Everybody in India, whether it's a risk, whether it's a business decision, it's reactive, not proactive. तो proactively जब आप करोगे तो you end up, see, you might still go wrong. मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि it's a shield or it's a guarantee card. No, but you end up doing minimal loss. You end up doing a minimal wrong decisions. तो क्या होता है, इसकी वजह से आपको confidence बढ़ेगा. Yeah. Next thing is you will not take a wrong decision next time. So you understood where I went wrong, and this knowledge will give you an idea to how to have a right set of decisions in the coming days. So this is one thing we can add it up. And while giving the capital back, they don't understand the value of time. Businesses, mostly small businesses, they don't understand the value of time. Meaning? Repayment well in time, earlier the payment, earlier foreclosure. If you had heard, most of the people, there's a phrase called as foreclosure or pre-closure. Isse pehle, there were some charges, even regulator said, sorry boss, you can't do that. It is a privilege and you cannot stop someone from paying early. And there are no pre-closure or foreclosure charges in any way. If you take a loan, अगर आप जल्दी दे रहे हो तो खुशी से ले लेगा वो. Yeah. You have to incentivize for that. That banks don't incentivize. पहले तो चार्जेस होते थे. हाँ, but if you see जल्दी क्लोज करो तो पैसे तुम एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे. So no, don't you think it is senseless? It's bullying. So instead of that, I won't say a big incentive. A very minimalistic incentive is given. Can you imagine what will happen to that customer? He will get a positive vibe that next time if I take a capital, let me see, depending upon the need, agar close it early, I'll get more incentive. Now coming to the other side of the story, the other person who is taking the loan, he also should develop his trustworthiness. How will he develop? So one thing is you can incentivize, which doesn't happen. And number two, in case if something goes wrong in the entire course, things are not handled well, especially in the digital lending space or in NBFCs I've seen. So banks might have their own protocol, because RBI has laid a set of rules to recover the money. You can't go after business hours. There are certain rules which you have to follow, right? At the end of the time, we are living in a civilized society, right? पैसे दिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुझे खरीद लिया, right? Again, वो बोलते हैं ना, दोनों हाथ से ताली बजती. So both are equally responsible. Now, if this guy who has taken a loan is not cooperating, so what he has to do? Again, he will end up, having some sort of a result. Yeah. Now, both the guys are, a tandem and understand each other. See, I'll tell you, 80% of, or not 80, more than 90% of the problems are sorted out at a common point discussion. Where you sit together, discuss, look at a solution. Problem को अगर आप problem की तरफ देखोगे, you'll not end up getting a solution. You need to figure out a solution. Okay, example मैंने आपसे एक 10 लाख का लोन ले लिया और मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ. I need to come to you or you need to come to me, sit and work out a formula, a mechanism, how we can come out of this. तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं नहीं दूंगा तो आपको चलेगा. Again, you'll have a problem. ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे छोड़ सकते हो. You cannot, write off that too. So how do we work? What kind of a time frame we can see? What are the other modalities? हो सकता है कि you might end up me giving one more product of you, not again a loan, which might again add up my revenue to that. So that क्या हो सकता है? Imagine मैंने आपसे working capital का 10 लाख लिया and I ended up having a loss due to some reason. And I might need some product of you, some product which is not only in the form of capital that can add my production, that can add my supply chain. हो सकता है कि मेरा brand promotion उससे बढ़ जाए. So then what happens? You are actually helping yourself in return. So that mindset these people should get, especially this segment of lending. They don't look into that. तो उनका एक ही लेकिन फिक्सेड माइंडेड है. आपने मेरे से लोन लिया, आप कब दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ, यू कैन गिव. सो दिस हैज टू कम. बट क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? क्यों लोगों का, पुराने बैंक्स का और सारे जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो लोग हैं उनका फोकस कस्टमर सेंट्रिक या कस्टमर की प्रॉब्लम्स पे क्यों नहीं है? व्हाई डू यू थिंक सो? दिस इज इनबिल्ट इन आवर कल्चर. If मतलब? Most of the thing is, I'll tell you why I have to tell you culture means. For example, you want to go for a vacation. Imagine you want to take a break. You just call someone and I want to take. I'll just give a random example. Not to go. आप उत्तराखंड जाना चाहते हो, and you'll just call up. I want to get a package for package and just suggest me. Trust me, you will not understand why you are coming and what is the purpose.
वो तो यही देखेगा कि आपको एक हफ्ते का पैकेज दे और सबसे महंगा वाला रूम दे, और वो सस्ता वाला ना देखे और वो ना बेचे सस्ता वाला, और बोलेगा सस्ता वाला है सर लेकिन वो बुक हो गया सीजन में, ऑल आर सोल्ड आउट, एंड ही विल गिव यू अ नोशन दैट वो थोड़ा बहुत फोमो भी देगा वो कि सर वो भी 4 रूम ही बचे सर, अब आप बताओ सर क्या करना, बिकॉज यू कांट गो एंड सी देयर, राइट, यू ट्रस्ट हिम. Now instead of that, had he told that this is the actual fact, it's up to you, what is your budget, how you want to cater, what is the purpose. See, it is too personal, but yes, it's required. Do you want to come down to wind up, have a relaxation, or you want to come down for a business purpose? Even though business, is it like 2 days? Do you want to mix, business and, pleasure both together? Somebody be right. अगर मान लो कोई मीटिंग था 2 दिन के लिए और 2 दिन रुक गए, टहल के आ गए, घूम लिया, तो दिस हैपन्स. अगर मान लो बंदा, अगर यू टेल नो आई एम कमिंग फॉर बिजनेस पर्पस, आई हैव अ 2 days मीटिंग एंड आई वांट टू गो बैक, ही कैन टेल सर श्योर कम डाउन, आई एम नॉट गिविंग फॉर फ्री. ये जो 3rd day का पैकेज है ना, आप लेने से फायदा, यू जस्ट गिव अ ट्राई, अप टू यू. देन व्हाट हैपन्स, यू गेट दैट फीलिंग, लेट मी ट्राई, यू गेट अ क्लैरिटी. दिस क्लैरिटी इज मिसिंग इन एनी इंडस्ट्री. सो टेल मी, किसके लिए वीगोफिन है और किसके लिए नहीं है, in 2 simple lines. Perfect. 2 simple lines for किसको यूज करना चाहिए, 2 simple lines for जिसको नहीं यूज करना चाहिए. ये एक रिटेल कस्टमर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. जो छोटा है, जो 4 लोग 5 लोग, उसको जरूरत नहीं है, ही कैन डू मैनेज. तो मैंने तो बोल दिया किसके लिए नहीं है. एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है. दिस इज फॉर द SME जो एक 10-15 लोग है, एक 10-15 लाख का बिजनेस करता है, उस बिजनेस के लिए जो ही कैन ऑटोमेट एवरीथिंग, उसका कैश फ्लो से लेके एवरीथिंग ही कैन ऑटोमेट. तो 10-15 लाख से लेके कितना he can आपको enterprise guy, even an enterprise guy can take a solution because we can give a curated solution for him. Anybody who is SME and above, स्मॉल मीडियम से बढ़ के ऊपर है, बल्कि ये रिटेल बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. आई वुड नेवर रिकमेंड अ प्रोडक्ट फॉर हिम बिकॉज उसके लिए फायदा है नहीं. इतना प्रोडक्ट से यूज कहाँ करेगा. अब उसके पास 4 लोग, पेरोल क्या रन करेगा, ऑटोमेट क्या करेगा, कैश फ्लोस क्या देखेगा, और उसके पास हो सकता है कि 1 अकाउंट हो या मैक्सिमम 2 अकाउंट हो, तो उसको उतना डैशबोर्ड में दिखने का देख के फायदा नहीं है, राइट. तो कमिंग टू SME and above, this is the right fitment. Now coming to the other product of what we have, banks, cooperative banks, small finance bank, and even see large banks, they don't need our product to be very, because they have everything inbuilt. They have a technology, they have a team, they have resources, and they have right amount of capital, and they also have time. A smaller bank, it can be a cooperative bank, it can be a small finance bank, or it can be any bank which is not interested to invest in technology, does not want to does not want to diversify its focus on building a technology product. It wants a ready-to-consume product, very lightweight, asset-light. See, that is the best way to have your profitability. Asset-light product and have a better approach, automated approach, and outsource it to a trusted partner. So that bank can be a partner to us. So we can give a better solution to them to empower their own customers. See, where they are failing or where they are missing the mark. Failing is a wrong word. Everyone is trying to make a mark here. But where they're failing is they are trying to compete with the bigger bank. Yeah. And they can't do. The reason is they are not ready for that game. जब तक आप उस गेम में आओगे नहीं, उस गेम कैसे खेल पाओगे. तो you take some person, some fintech company like us who are well ahead in terms of approach and solution. Use them, go ahead and compete with the larger bank. That's what I can say. कब start किया ये? We started a year ago. 1 year back. We just completed 1 year, but we launched the product just in the month of August. अच्छा, अभी launch हुआ. There was a global fintech festival in the month of August. I think you heard. I saw the ad also outside the Jio and वो screens पे लगी हुई थी Wegofin की, right? Yeah. Thanks. So wow. So the purpose was to to reach out the message that it's going to launch. So we launched in the event. It was a grand success for that matter. तो ये जो solution है, before giving solution we thought, we understood what is the pain point and why nobody is in the market. I'll tell you what we understood. Might be limited to our knowledge. There is too much of heavy lifting. You need to meet too many stakeholders and you need to run a tight ship. In this ecosystem, what we call it as AI-powered connected banking or fintech banking ecosystem, one thing is partnerships are not that easily made. Banks being legacy systems, I can't blame them. They have their own set of challenges. क्या होता है एक बैंक से पार्टनरशिप करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग. सो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज, आई विल नॉट ब्लेम इट एज अ फिक्सेटेड माइंडसेट. चैलेंज उनको ये होती है कि दे हैव टू थिंक मल्टीपल टाइम्स बिफोर दे पार्टनरशिप, they extend a partnership with any fintech or any partner. The reason being is they are a regulated agency. They are like a nodal agency, and the kind of a regulation we have now. It's good, regulatory has to be there. यानी कि अगर मान लो अगर वो framework नहीं है, तो there is every possibility, one of the stakeholder might go wrong, whether it's a end user or a bank or a merchant or a businessman. But limited time frame में इसको एक understanding के तौर पर लेके जाना banks में थोड़ा दिक्कत है. तो पार्टनरशिप्स करना इतना इजी नहीं होता. एंड अंडरस्टैंडिंग इज कितना टाइम लगता है, कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो पार्टनरशिप करने का बैंक से? वी टुक लाइक couple of months. It for again bank to bank it depends. One bank might take 2-3 months, one bank might take 4 months. कितने बैंक्स पार्टनर है अभी Wegofin? We are like close to around 12 banks. We are 12-13 banks. Top 3 बैंक्स कौन से हैं आपके? Axis Bank, IDFC Bank and Yes Bank. So let's say HDFC and Axis. ऐसा क्या हुआ कि Axis वालों ने पार्टनरशिप कर ली और HDFC वालों ने नहीं करी? Okay, there might be 2 reasons. One, we reached out them early, and they are also like embracing change, and they are also very eager to explore. See, if a bank as a entity is curious to understand the product, validate the product. See, if any product goes to a bank with the right intent at the right time, in a right framework, मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि if everything falls in the regulatory framework, no bank would say no. But again, it depends. Are they also interested the way we are interested to partner with us? So if they are able to see the value, if they are able to see a long-term partnership, they will certainly good. Do you think कि बहुत ज़्यादा depend करता है on the person you are talking to as well? To an extent, it matters. I agree. Because if the person is not taking the signals in a right way, or is not able to comprehend, or not able to get what we are dealing, the crux अगर सही तरीके से या in a time frame पे पहुंच नहीं पा रहा, तो there is a possibility like you end up having multiple discussions. And one more thing, the more you meet and the more you understand, it's better. Communication should be free flowing, because every bank, they have their own mandate. Yeah, they are running towards their own set of goals, own milestones to reach. So this is also one more reason to do. So किसी बैंक ने आपको कुछ बोला है? कुछ questions पूछ, like what are the questions they ask you? Usually the first question what comes is, why are you doing this? Second thing is, what if something goes wrong? हाँ, तो अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? या आप ले सकते हो? तो आप क्या जवाब देते हो इसका? वी हैव टू से यस, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लेंगे जवाबदारी. तो गलत क्या हो सकता है? गिव मी एन एग्जांपल. गलत ये हो सकता है कि अगर कोई गलत कस्टमर या गलत मर्चेंट, वो आप ऑनबोर्ड कर सकते हो. गलत मर्चेंट मतलब क्या? अगर उसका इंटेंशन, अगर यहाँ पर भी एक अगेन दिस डाइवर्शन, हम किसी बिजनेस को ऑनबोर्ड कर रहे हैं या उसको सोल्यूशन दे रहे हैं. जब हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, हमको ये तो पता नहीं होता कि वो गलत है सही है, यानी कि उसका इंटेंशन गलत है सही है, हो सकता है उसके साथ भी गलत हो सकती है. फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, आपका UPI ID या आपका बैंक अकाउंट किसी के पास है. अगर किसी ने बाय मिस्टेक या जानबूझ के एक अमाउंट डाल दिया, ओके, एंड दैट अमाउंट इज पर्टेनिंग टू समथिंग विच इज नॉट रेगुलेटेड, कोई AML का पेमेंट हो गया, कुछ समझ लो. सो देन यू आर स्टिल पार्टी टू इट. सो व्हाट हैपेंस, यू हैव टू आइदर रिवर्स इट. अगर मान लो बहुत बिजी हो या आपको पता भी नहीं हो, सो देन योर बैंक अकाउंट एंड यू आर सब्जेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, बिकॉज it came to you. And why did it come to you? You cannot go and say, I don't know. So it also depends how we are representing, what measures we are taking. See, risk is there in finance. See, any financial product or any financial instrument is not free from risk, including cash. So you're like, अगर किसी कस्टमर का पैसा चोरी हो गया, गलत हो गया, अप डाउन हो गया, तो हम लेंगे तो वो लेना भी पड़ता है टू एन एक्सटेंट. बट तो इसके लिए बैंक आपसे कुछ अमाउंट रखवाता है? कुछ जरूर, बहुत लेते हैं अमाउंट. दे आस्क टू डिपॉजिट इन अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड आई थिंक फेयर इनफ till they get a point of confidence. And how large the security deposit usually is? Sometimes it starts from lakhs and it might goes up to crores per customer. Not customer, as a one time activity. Per customer usually वो देखते नहीं है. वो देखते हैं कि टोटल आप कितने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो, टोटल कितना अकाउंट्स खोल रहे हो. सी, इवन बैंक हैज अ मैंडेट टू ओपन न्यू अकाउंट, बट दे आर नॉट एबल टू ओपन. इवन दे नीड कस्टमर, राइट? दे नीड सिंपल सी बात है. ऐसा तो नहीं होगा कि आप सुबह उठ के रेडी होके चलो आज जाके नया बैंक अकाउंट ओपन करूंगा. ये तो नहीं है, राइट? सो एवरी बैंक वांट्स अ न्यू कस्टमर, एंड फ्रॉम वेयर विल दे गेट?
They need to get from somewhere, right? Now they have multiple agencies. You समझ लो कि business consultant हो गया या कोई third party agency हो गया. But the challenge is they need to get a quality customer. Quantity तो सब कोई दे देगा. And now everyone has come to a stage where they don't want that clutter. They want the best. Now getting the best is a challenge. So we help them in such a way that we give them a best customer. So what we do is we do the entire heavy lifting. We first identify a customer, source him, do the KYC as per again RBI norms and regulation. We make sure that every point is checked thoroughly. Then what we do is we understand what that customer needs. उस किस segment में है, वो micro segment में, medium segment में, large segment में, और उसका क्या pain point है. See, I'll tell you, unless until you do the root cause analysis, unless until you understand the pain point of the customer, giving him a wrong product will end up into disaster. But majority तो ऐसे ही होता है आज तक. हर जगह ही होता है. In fact, there's a economic time study कि लोग अपना बैंक अकाउंट बहुत frequently change करते रहते हैं. Correct. And when they were asked कि क्यों change करते रहते हो, they said 60% of the people were not happy by the products which bank sold them. So they were not happy. They were like ये मेरी requirement तो meet ही नहीं करती थी और मेरे को ये बेच दिया और मैंने ले लिया. 60% लोगों को ये प्रॉब्लम थी. And 52.6% लोग उसमें से अनहैप्पी भी थे कि उस पे चार्जेस भी लग गए. मतलब अननेसेसरी चार्जेस लग गए, हमें पता ही नहीं था. दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल. इनिशियल फेज में जब वो लिमिटेड लर्निंग है या जब लिमिटेड यू हैव अ आइडिया अबाउट अ प्रोडक्ट, दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गो रॉन्ग. आई टेल यू व्हाई. You need to have a financial advisor or some guru for that matter to guide you. See, without it, it doesn't work. Because see, these things were not taught to you in your school and college. Yeah. Unfortunately, let us accept this fact. India में वो एक knowledge stream I would really recommend. If how to invest, where to invest, how to handle finances. Yeah. At a very generic level. मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि you need to have a PhD, but at least at a college level, if it's incorporated as a subject, trust me, we would be on a next pedestal. True. The reason being, everybody should comprehend how to handle his finances. In short, I have to tell you, आप businessman हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको स्कोर बोर्ड के बारे में आइडिया नहीं है. स्कोर बोर्ड के बारे में आइडिया है लेकिन पता नहीं कि स्कोर्स कैसे हो रहे हैं. यूँ मान लो आपने एक बॉल को आपने हिट किया आपने और वो 4A 6A 1A आपको पता नहीं. दिस इज व्हाट हैपेंड. बट आपको ये पता है कि आपने वो बॉल को मारा. कितना रन उसे हासिल किया वो पता नहीं. So this is what happens. So I firmly very beautifully explained. This is what happens in stock market with most of the people in financial management. Don't talk about stock market. It is not a subject where I should touch. But out of my limited understanding, right, stock market is the real, money making ecosystem if invested properly. And if you see, not every person makes money in stock market. Right? You see where the Sensex has reached. You heard about Big Bull. You heard about all those people who have made fortunes, in a very big way. Yeah. And stock market, it is a most sought of thing, and it's highly regulated. इसके बावजूद भी stock market पे बहुत सारे लोग पैसे नहीं बना पाते. You know why? Most of the people are first timers. The retail investors की बात कर रहा हूँ मैं. देखो, institutional investors की बात ही मत करो because they have a complete knowledge. Very different. They have a different knowledge. They have a different exposure and also they can mitigate the risk if required. ये जो retail investor है, जो first time जो कुछ पैसे मेरे पास कमा लिया, I got a first salary, let me invest in SIP or in a stock market. He goes and invests without a guru, without a knowledge partner. So then what happens? He ends up in investing in a wrong portfolio. Yeah. He does not know how to manage a portfolio. या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट सही हो but he does not know how to constantly manage it. See, stock और मार्केट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे बन गए. I need to constantly monitor the trends. I need to monitor what's happening in the market. See, the various situations, right? Geopolitical, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट कर सकते हैं एक स्टॉक के ऊपर. एंड वो समझना मेरे लिए नामुमकिन है व्हेन आई एम अ नोविस. वो समझने में शायद हो सकता है कि आपके 4-5 साल निकल जाए. तब आपको उस पीरियड में क्या होता है, यू एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी एंड यू बुक इंस्टेड ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स यू बुक लॉसेस. तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है. दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. इट वॉज नॉट योर कप ऑफ टी. इट्स अ रॉन्ग नोशन. इट वॉज यू डिड नॉट गेट अ राइट मेंटर. But I'll tell you, I read something very interesting today. Okay, मैं एक सेंटर को निकालता हूँ, एग्जैक्ट पढ़ के दिखाता हूँ.
राइट, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग मार्केट्स की बात कर रहे थे और फर्स्ट टाइमर्स की जो पैसे डुबा रहे हैं उस पर, तो वेरी इंटरेस्टिंग राइट, विच वाज अराउंड ओके कि दिस वाज या सो इट्स लाइक, तो अभी इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो है डेरिवेटिव मार्केट्स में, उन्होंने 21 से 24 के बीच में 1.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ है उन्हें। एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल, मेजॉरिटी ये लोग थे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और राजस्थान से। नाउ व्हाट्स मोर फैसिनेटिंग इसमें कि इन सब का जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा है वो ऑलमोस्ट सबका एक सिमिलर है, लाइक मेजॉरिटी लोगों का मिडिल क्लास काइंड राइट। नो, तो बल्क ऑफ दीज ट्रेडर्स जिन्होंने पैसा डुबाया है ये हैं बिलो द एज ऑफ 30 एंड ये कमाते हैं 5 लाख पर साल या उससे कम। तो मतलब इंडिया में जो 5 लाख से कम कमाता है, जो 30 के अंडर है और जो टॉप 30 सिटीज से नहीं आता, जो टियर 3 टियर 4 सिटीज से आता है, वो लोग सबसे ज्यादा पैसा डुबा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। कैन यू इमेजिन? एंड यू नो व्हाट्स कॉन्ट्ररी? द कॉन्ट्ररी इज that wow, okay, this is insane. good this इन लोगों का जो नंबर है, ये पहले 31% लोग 22-23 में इन्वेस्ट करते थे। ओवरऑल मार्केट में जितने लोग हैं उससे 31% लोग जो बिलो दी एज ऑफ 30 हैं, छोटी सिटीज से आते हैं, 5 लाख से कम कमाते हैं, जैसे 31% थे। okay? अब ये लास्ट ईयर, इस ईयर 43% हो गए। सो ये बढ़ चुके हैं लोग, ज़्यादा लोग कर रहे हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि 93% लोगों ने इन एज में लॉसेस करे, जानने के बावजूद। तो ये सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट्स में स्पेसिफिकली, वहाँ पर अगर मैं 30 के बिलो हूँ, मेरी 5 लाख से इनकम कम है, मैं टियर 3 टियर 4 से आता हूँ, मुझ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे जैसे 93% लोग का लॉस हुआ है इस मार्केट में। उसके बाद भी ये नंबर बढ़ते आ रहे हैं, लोग ज़्यादा उम्मीद में आते जा रहे हैं। रियली डिस्टर्बिंग एंड अलार्मिंग, लाइक वेयर आर वी हेडिंग, क्या हो रहा है? एंड यू नो व्हाट्स प्रोपोर्शन, एक जो दूसरा इसमें कॉन्ट्रास्ट था ऐसे स्टडी में, जो लोग वेरी हाई इनकम वाले लोग हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, उन्हें लॉस कम होता है। करेक्ट, सही। और जो 5 लाख से कम कमाते हैं उन्हें लॉस ज़्यादा होता है, प्रोपोर्शनेटली। सो पीपल who make more money, maybe they are investing more wisely versus people who are not making money. तो जो कम पैसे कमा रहे हो थोड़ा गैम्बल जैसे करके चाहता है कि मैं जल्दी और बड़े बढ़ जाऊँ, और जो ज़्यादा कमा रहे हो वाइसली कमा रहा है। सो देयर वाज, हो सकता है कि क्वांटम ऑफ द अमाउंट आल्सो माइट प्ले अ रोल। नो इट्स नो क्वांटम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योरली बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन कैपिटल। कि अगर मैंने 100 रुपये डाले और एक इंसान जो 1 करोड़ कमाता है उसने 100 रुपये डालें, और एक इंसान जो 5 लाख कमाता है उसने 100 रुपये डालें, तो 5 लाख वाले के ज़्यादा चांसेस वो डुबाएगा वर्सेस 1 करोड़ कि दिस इज द डेटा विच इज आउट देयर। वेरी अलार्मिंग, वेरी सरप्राइजिंग। डू यू थिंक हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स लिखे होने चाहिए? लाइक लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल एक XYZ फंड, म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करना है लोगों को, उसके नीचे लिखना चाहिए इन्वेस्ट इन दिस इफ यू वांट दिस 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 दिस, डोंट इन्वेस्ट इफ यू आर दिस 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 दिस। If you see nowadays they put that risk meter and all, right? But it's a very beautiful way of showing that what it is, but it is not going to a level where whether this suits me or not. This is risk meter is आधे से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स पे रिस्क मीटर अच्छा ही रहता है, लाइक बेकार नहीं रहता, लाइक बहुत ही रेयर पे बेकार। इट्स आई फील बस स्मॉल मिड लार्ज उसके हिसाब से रिस्क मीटर अप डाउन होता है, बट ऊपर अगर सारे मान लो अगर मुझे अच्छे लार्ज कैप्स में भी देखना है, 5 में कंपेयर करना है, तो रिस्क मीटर सेम ही रहेगा। It's not going to the level of personalization जितना मुझे चाहिए लाइफ में। That's what. So we call a word called hyper personalization. Any product which is curated to your portfolio, your need, your expectation, that will make sense. This is going to help you to understand I need it, and also you get a right. You end up buying a right product. वो product शायद X company से हो, Y company से हो, it doesn't matter. So this hyper personalization is really important in everything. तो सम वे, नॉट एलैबोरेटली, थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्रोज तो हर कोई बात कर लेता है, कोई भी प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ,
या सर्विस बेच रहा हूँ, तो मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा ना उसमें गलतियाँ क्या है, व्हाई विल आई टेल दैट, बट उसको गलतियों के बदले में ये इनको सूटेबल नहीं है या इनको ही सूटेबल हो, तो दिस इज वन थिंग which most of financial products has to incorporate. I believe firmly. तो क्या होता है ना, no one will have a heartbreaking situation. अरे मैंने wrong लिया, because see, to be very frank, none of the fintech products or financial products or banking products were created with the wrong intention, right? I don't think so. It's not possible because fitment गलत है, because वो wrong person को दिया गया, तो it becomes wrong Fair call. Perfect. Thank you so much for giving me an understanding and everyone an understanding about banking, problems of banking, problems which we have because of our culture, problems, solution-oriented mindset, and too many more things that we covered. Thank you so much. And बहुत important था जो बताना कि किसके लिए चीज़ सही है और किसके लिए गलत है. Thank you for doing this. Thanks a lot, Raj. Thank you. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे. जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा. एंड हम डिटरमाइंड हैं, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा. बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट.